अभी तक ध्यान दो प्लीज, अभी तक हमने क्या देखा कि इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है, so we use the simple formula pi upon p0 into 100 where we always say कि percentage change हमें find करना है, तो we take into account prices of current year upon prices of base year or previous year. But from practical point of view, is price the only factor or quantity also is a very important factor? हो सकता है कि प्राइस बढ़ गया पर क्वांटिटी कंजम्पशन कम हो गया, तो फिर ओवरऑल एक्सपेंस हैज आइदर स्टेड वेल इट इज और इट हैज गॉन डाउन. पॉसिबल है कि नहीं है? सो नाउ इंडेक्स नंबर विल स्टडी नॉट जस्ट एज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस but also function of price as well as quantity of items consumed. You understood this? Okay. Now, the first formula was given by statistician last year. He said IL is equal to sigma pi q0 upon sigma p0 q0 into 100. Now, what is this? Pi and p0 you all know. Q0 is quantity of base year. यानी उसने क्या कंपेयर किया? ये pi upon p0 तो सबको याद है, multiply with q0. So over here price of current year with quantity of base year and price of base year with quantity of base year. Now he took quantity of base year over here. Then came the second statistician, Paasche. Index number. Now, Paasche's index number में. Now pay attention. IP. Now he said last year said we take quantity of the base year. I will take quantity of current year. So PIQI upon P0QI into 100. तो यहाँ पे QI is quantity of base, sorry, quantity of current year. Okay, तो this formula given by last year, Paasche said ये नहीं, हम लेंगे quantity of current year. और इन दोनों से सबसे स्मार्ट आया फिशर, इंडेक्स नंबर. नाउ ही सेड कि नॉट जस्ट क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ये दोनों, इसने कहा क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, इसने कहा क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. माय इंडेक्स नंबर इज अंडर रूट ऑफ लास्ट ईयर एंड पास्ट. एंड देखो उसने क्या मेहनत की है ये फॉर्मूला पे. एंड हिज इंडेक्स नंबर became the ideal index number. Can I say this under root IL into IP is geometric mean? So we can say that Fisher's index number is a geometric mean of last year and past year. Now in a sum where you have to find out last year, Paasche and Fisher, you will directly use this because तुम्हारे पास ये दोनों available है. But in a sum where you are asked only find Fisher's index number, so in that case you will take IF is equal to sigma pi q0 sigma p0 q0 into sigma pi qi upon sigma p0 qi under root into 100. Then you will go for this formula. Understood this? फिर तुम्हें ये अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है. समझ में आ गया? Okay, very important formulas. Any doubt in this? What you remember is Fisher's index number is the ideal, okay, and it is a geometric mean of last year and past year. Got it, all of you? Now, I'll give you an example of how this will come in sums. See, you will have
price of base year, price of current year, quantity of base year and quantity of current year. Now find क्या करना है? PIQ0. So you'll have first column PIQ0, this into this, then P0Q0. So this into this. Let's say these are various numbers. Then PIQI and P0Q. So PIQI and P0Q. Understood this? तो ऐसे तुम फाइंड करके इन सब का टोटल ले लोगे, which will be sigma. Okay, and then you'll apply it in the formula. Got it? Very simple. लिख लो please. Last year. कैमरे में ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है. See, याद कैसे रखना है? PIQ0 तो कॉमन है, यहाँ पे it is Q0 Q0, यहाँ पे Q1 Q1. Got it? Now, page number 29. Please write page number 29, exercise 1.3, question number 3. We have already done 1 and 2, so we are doing question number 3. Please ध्यान देना, try to understand this. Here the typical part is this unit. ये unit बहुत typical है. आज मैं सिखाऊंगा तुम्हें इसका importance क्या है. पहले we'll do a simple sum. Question 3. Find the last year Pascha and Fisher's index number for the year 2015 with the base year 2014 using the following information. Items are given. So let's write. Write it vertically. Items. So wheat, rice, pulses, oil, cloth and kerosene. Now this is very important in the subsequent sums and for exam. Unit यानी क्या कि wheat जब हम खरीदने जाएंगे तो उसका जो प्राइस दिया है that is per kg. ध्यान देना प्लीज, अदरवाइज नेक्स्ट सम में प्रॉब्लम होगा. ये समझ में आ रहा है? पहले मुझे कर लेने दो, ऐसा है तो समझ लो पहले. Now wheat, when we go to buy wheat, we are going to pay price per kg. और यहाँ पे जो प्राइस दिया है ना 15 rupees and 18 rupees, it is per kg. You understood this? Now rice also kg, pulses also kg, oil भी kg में, and cloth is meter and liter. Now ये जितने भी प्राइस दिए हैं ना, see in the year 2014 price of rice is 20. This is 20 per kilogram. How much kilogram you are buying? How much kilogram you are buying? मैं राइस की बात कर रहा हूँ. You are buying 10 kilogram. You understood this? फिर से एक बार. Cloth price is 21.25 per meter. How much meter I am buying? 15. You understood this? तो जब मैं P0 Q0 करूँगा तो मुझे पता चलेगा 15 मीटर का कितना टोटल कॉस्ट हुआ. All of you understood this? Okay. Now units के बाद we have year 2014. Now you be careful about it because every sum will have different order. Okay, over here 2014 में we have quantity, it's the base year, so Q0. We have price which is P0. Then 2015 we have again quantity Q1 and we have price P1. Now हर एक sum में this may be different. ऐसा हो सकता है कि पहले P1 Q1 दिया and then P0 Q0. तो तुम पहले ये लिख लेना, फाइंड कर लेना कि क्या दिया है, what exactly is given, and write the headings accordingly. Now the next columns
We want to find last peer, Paasche and Fisher. So we need all. So PIQ0, P0Q0, PIQI and P0QI. Now when you do these calculations, be careful कौन से कॉलम के साथ किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो. Okay? Yes, you can start now. 20, 10, 10, 6, 15 and 18. 15, 20, 26.5, 24.8, 21.25 and 21. 30, 15, 15, 8, 25, 30. 18, 31.25, 29.5, 30, 25 and 28.80. Now इसमें तुम कैसे करना? ओके, तुम ऐसे हाथ रख के करना ताकि तुम इसमें मिस्टेक ना करो. ओके, ये सही में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजन वाला है और इसमें तीनों फाइंड करना है. यानी लास्ट ईयर रॉन्ग हुआ तो फिशर भी रॉन्ग हो जाएगा, पास्ट ईयर रॉन्ग हुआ तो फिशर भी रॉन्ग हो जाएगा. तो केयरफुल रहना. PIQ0 360, 312.50, 295, 180, 375. How much? 518.4. P0Q0. What 47.2? Sorry. Yes, that's right. Even 8.75. Yes. 378. PIQI. Please be careful, okay? 21 into 50. First bit. 4, 4, 4. 2.5, 240, 625, 864, 450, P0, Q1. 450, 300, 397.5, 198.4, 531.25, 630. इसका टोटल नहीं किया, कर दो. This one 2040.9, 16. 2507.25. Now, after you do all the totals, okay. Now, write the heading. Last year's index number.
PIQ0. Last is index number IP. Fisher's index number. What is last year? 7 IL. Okay, IP is 85. Wait, first we have to write this. Or 20, 7, 9. 9. Okay, now page number 29. Question number 4. Exercise 1.3. Please pay attention, mark it important for exam. ये सब सम्स है ना, कन्वर्जन वाले सम्स है, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने पड़ते नंबर्स. So ध्यान देना, please pay full attention to this sum. Otherwise आगे ऐसे कन्वर्जन वाले सम में स्टूडेंट्स को हर साल ये चैप्टर में यही टाइप के सम्स में प्रॉब्लम्स होते हैं. ओके, तो नहीं होंगे अगर तुम ध्यान दोगे तो. ठीक है. Now see, there's a very commonsensical thing over here. See item A. Okay, see item A. उसमें यूनिट देखो क्या दिया है, 20 kg. It means when I go to buy item A, वो item A जो है ना, उसका जो प्राइस है ना, it is for 20 kg. But how much am I consuming this year 14 में? Only 5 kg. यानी this price 80 is for 20 kg, but I am buying 5 kg. तो मुझे ये प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू पर किलोग्राम. यू अंडरस्टूड दिस? सी, मैं गया दुकान पे, मैंने बोला ये आइटम ए का प्राइस क्या है, तो बोलेगा प्राइस इज 80 रुपीज. मैं बोला 80 रुपीज में क्या मिलेगा? बोले ये 20 किलो का बैग मिलेगा. तो मैंने कहा मुझे 20 किलो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 5 किलो. सो विल आई पे 5 into 80 400? आई विल से पर किलो कितने में पड़ेगा, कितने रुपीस में पड़ेगा? 4. सो इफ आई एम बाइंग, ऋषि का ध्यान दो, बाद में बाल बना लेना. ओके, इफ आई एम बाइंग 5 kg, then I cannot do Q0 into P0 as 5 into 80. If I do that, समझ में आया क्या गलती कर रहे हम? All of you understood? फिर से एक बार. Okay, over you. See, समझ लो, बाद में लिखना थोड़ा टिपिकल है. आइटम ए, यूनिट जो है 20 kg है, प्राइस जो है P0 80 रुपीज, क्वांटिटी Q0 is 5 kg. Now normally what we do is P0 into Q0. ये दिया ही नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, या सिर्फ kg दिया होता तो प्रॉब्लम नहीं था, पर इधर दिया है 20 kg. It always means that this price is for this unit. समझ में आया ये कि 80 रुपीस में क्या मिलेगा? 20 kg मिलेगा. But I am buying how much? 5. So if I do P0 into Q0, it should not be 5 into 80. It has to be what? 80 divided by 20, which is equal to 4. समझ में आया? And this 20 should become 1. 20 becomes 1 kg and price becomes 4 rupees. Understood this? तो इससे कहते कन्वर्ट करना. So हम क्या करेंगे? Item A, unit instead of 20 kg, we will take 1 kg.
So price will become how much? 80 divided by 20, which is equal to 4. ये सबको पता चला? Okay. आगे भी ऐसा आएगा, ध्यान देना, so you will become confident. Now, इसके साथ P1, which is price for the year 2014 and 2015, price for year 2015. अब यहाँ पे 120 हो गया, तो ये 120 कितने किलो का हुआ? 20 kg. तो 1 kg का 6 rupees. So यहाँ पे it will be rupees 6. Quantity year 2014. 2014 5 kg, which is Q0, and 2015 Q1, which is 7 kg. अब ये तो as it is ही रहेगा. In short, जहाँ पे 1 kg दिया नहीं हो क्वेश्चन में, या 1 यूनिट नहीं दिया हो, वहाँ पे तुम्हें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा into 1 यूनिट. ये kg, तो ये भी kg और ये भी kg. It cannot be this is kg and this is gram. You understood this? प्राइस बोला किलो का, खरीद रहा हूँ ग्राम में, तो वो पॉसिबल नहीं है. Understood this? Now let's see item B. In item B only kg is given, but तो ये 20, ये 24 is fine. But what is given over here? 2400 gram is given. Now I cannot do 20 rupees एक किलो का 2400 ग्राम, तो will I pay 2400 into 20, 48,000? No. Okay, हाँ, हंस रहे हो बराबर है, पर ऐसी गलती करते स्टूडेंट्स. So what we will do? We convert gram into kilogram. 1 kg is how many grams? 1000. So this will be 2.4 kilogram. And next is 4 kilogram. You understood this? Okay. Let's see the next one. C. Quintal. Now, unit is quintal, but quantity consumed is kg and kg. 1 quintal is how many kilogram? 100. लिख लेना यहाँ पे. 1 quintal is equal to 100 kg. 1 quintal is 100 kg. 1 ton is 1000 kg. Now, 1 quintal का प्राइस है 2000 rupees. तो 1 किलो का कितना? 20 rupees. So over here 1 quintal से बन जाएगा 1 kg, and 2000 price will become 20. 2800 will become 28. यानी दोनों को डिवाइड करें by 100 and 100. Understood? 120 नहीं, 100 and 100. Is this clear? Okay. Now, what about consumption? 10 kg and 15 kg. Now, convert करने के बाद 1 आ गया, price भी 1 kg का आ गया, ये भी kg और ये भी kg. The units have to be the same. Now, D is dozen. Now, your 48 rupees is for 1 dozen, but I am buying 30 piece. So will I pay 30 into 48? No. So I will convert dozen को कितने में convert कर देंगे? Into 1 piece. 1 dozen यानी 12. So 48 divided by 12 is 4. 72 divided by 12 is 6. This 30 remains as it is, and 35 remains as it is. पता चला? Now only you can do Pi Q0 P0 Q0 Pi Qi P0 Qi. Is this clear? अच्छा, all of you understood this A, B, C and D. Okay? अगर 1 dozen दिया होता और 36 piece होता, तो हम इसको 3 dozen कर सकते थे ना? We can do like that also. Okay? पर 30 है, तो फ्रैक्शन में लिखने का कोई फायदा नहीं है, because ये तो शायद हो जाएगा 2.5, पर यहाँ पे 35 है, so which will be again recurring decimal. तो यहाँ पे हमने क्या किया? We convert into 1 piece. Got it? यहाँ पे भी price kg का था, unit gram था. We could have converted this into price per gram.
but it will be again decimals, so we converted gram into kilogram. तो ऐसा कोई thumb rule नहीं है कि ऐसा ही करना है, depends on the sum. Okay, now write this, find out pi q0, p0 q0, pi qi and p0 qi. Extremely important for exam conversions. Over here, right? Price, consumption. Now, as you can see over here, the format changed. Now it is P0, P1, Q0, Q1. So be careful. Now, we start with over here in this question number 5. We have to find only ideal index number. Which is the ideal index number? Fisher. So we have to use only one formula. Okay, तीन करने की जरूरत नहीं है. Now, item A. Now you can see that units are given in 20 kg, 5 dozen kg and 5 liter. It means you have to bring it down to uniform per unit. Now, item A. Unit is 20 kg, base year 2014. What is given? P0Q0 and 2015 P1Q1. Now, सबसे पहले आइटम ए 20 kg को क्या कन्वर्ट करेंगे अब 1 kg. So 20 kg will become 1 kg. So what will price become? 6 rupees. 10 kg as it is. 280 will become how much? 40. And 15 kg as it is. kg हो गया. यहाँ पे हो गया 1. ये प्राइस हो गया पर यूनिट. Okay. B में 5 dozen and 3 dozen and 48 piece. तो इसको dozen में करेंगे या piece में? Dozen. Very good. So it will be 1 dozen. 120 is for 5 dozen. So 1 dozen का 24. Consumption 3 dozen. Again 140. So 28. And then 48 piece will be 4 dozen. Understood this? Anyone wants me to repeat anything? Okay. Then C. 140 divided by 5 is 28. वो बेस ईयर हेडिंग गलत है. Okay. Now C में kg दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है. 4
price per kg दिया है, 5000 gram will be converted into 5 kilogram. Then 8 as it is and 4 kilogram as it is. All of you understood this? Okay. Then D. Liter. We have 5 liter. So it will be 1 liter. Then 52 is for 5 liter. 1 liter ka 10.4. Then 15 liter as it is. Then 58 divided by 5. So 10. 1.6 and 20 liter. हो गया liter all converted. Any doubt A B C D में कोई डाउट है? खुद कर सकते हो ना, ऐसा एग्जाम में आया या क्लास टेस्ट में आया. ओके, बी वेरी केयरफुल एज वेल. तो एक बार करने के बाद फिर से एक बार चेक कर लेना, ठीक है? Now we find out the remaining. Ideal index number is of Fisher. Therefore, Fisher's index number sigma p I q0 upon sigma p0 q0 into sigma p I qi upon sigma p0 qi under root into outside 100. Got it? What? One seventy. What's the total? Thank you. Okay. One 5 6. देखना. 15 and 150 and 15 fours are 1610. 20 and 56 112. So it's a 32. 232. P0 QI. P0 QI. 96. 16. 208. 43. मतलब 438. 308. 586. 410. तो आएगा 1.4257 into 100. 142.5. Answer.